So in the previous video, we have completed the chordates. We start being discussion on chordata. Now in this video, we are going to study the classification of subphylum vertebrata. So first we know the chordata. Chordata is further divided it into the subphylum vertebrata. And we हमें already पता है कि वो chordates is further divided it into the three subphyla. Number one, Urochordata. Number two, Cephalochordata. Number three, Vertebrata. So we'll discuss vertebrata from this video or in this video. Chordata, subphylum, vertebrata, and vertebrata further divide it into the two divisions. Divide it into the two divisions. So this is important. It divide it into the two divisions. कौन से? Number one, Agyantha, and number two, Gnathostomata. Right? This is on the first. मतलब chordata divide it into the subphylum vertebrata. Vertebrata subphylum further divided it into the two divisions. Number one, Agyantha, and number two, Gnathostomata. कंसिडरिंग कौन सा पॉइंट? जैसा कि हमने नोटोकॉर्ड को कंसिडर्ड करके पूरे एनिमल दो में डिवाइड किए थे. नंबर वन इज नॉन कॉर्डेट्स एंड नंबर टू कॉर्डेट्स. उसी तरह से वर्टिब्रेटा सबफाइलम दो डिवीजन में डिवाइड है कंसिडरिंग जॉज. कौन सा स्ट्रक्चर कंसिडर्ड है? कंसिडरिंग जॉज. सो अग्यांथा लैक जॉज, जॉ नहीं होते. So put it into the division Agyantha. Jaws present होते हैं मतलब they bears jaws and they put it into the category Gnathostomata. So this is the second structure considered किया गया है. First notochord को consider करके non chordates and chordates. Then second structure that is the jaw. अगर jaw नहीं है तो Agyantha. अगर jaw है तो that is Gnathostomata. Now second, Agyantha is further classified it into the class. And कौन सा class है? That is further divide it into the class and that is cyclostomata. कौन सा? Cyclostomata. Right? So यहाँ पे ये खत्म होता है. Second, Gnathostomata जो है that is further divided it into the two superclass. So यहाँ पे लिखूंगा further divided it into the two superclass. कौन से? Number one, Pisces, and number two, tetrapods. So these are the two superclass. Pisces and tetrapods. Considering the third important structure and that is locomotory structure. कौन सा structure? Locomotory structure. And कौन सा locomotory structure? That is paired appendages. Paired appendages. Paired appendages. Right? If अगर paired appendages is in the form of the fins, so यहाँ पे लिखूंगा bears fins. So यहाँ पे fins is paired appendages. They put it into the superclass Pisces. And if locomotory structure that is paired appendages bears limbs, they belongs to or they grouped it into the superclass tetrapods. अगर fins है pair appendages तो Pisces superclass है. अगर locomotory structure that is paired appendages
लिम्स है तो बी दैट इज सुपर क्लास टेट्रापॉड्स। क्लियर? देन अगैंथा क्लास साइक्लोस्टोमेटा में फर्दर क्लासिफाई हुआ, तो इन द सेम वे पाइसेस भी फर्दर क्लासिफाइड इट इनटू द टू क्लासेस। फर्स्ट वन इज chondric thighs. Chondric thighs. Always pronounce the spelling as per, always pronounce the word as per the spelling. एंड जैसे स्पेलिंग होता है उसी हिसाब से प्रोनाउंस करो, इट इज इजी टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग, राइट? सो chondric thighs and ostic thighs. Chondric thighs and ostic thighs. Ostic मतलब बोन, राइट? एंड chondric मतलब कार्टिलेज. Chondriocytes and osteocytes, right? So Pisces divided it into the two class. कौन से? Chondric thighs and ostic thighs. Then tetrapods is further divide it into the four class. कितने क्लासेस में फर्दर डिवाइड है? It divided it into the four class and that is very common. First, amphibia. Second, reptiles. Third, aves or birds. And last is mammals. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Last is mammals. That is we people. Right? Presence of mammary gland, presence of hairs on the body. This is mammals. So कितने बने? This is what the further classification of subphylum vertebrata. So we'll take the review. Considering jaw, vertebrata divide it into the two division. First, Agyantha, lag jaws. Further, cyclostomata class. Gnathostomata, deer jaw. Further divided it into the two superclass considering the locomotor structure, that is paired appendages. If pair appendages is present in the form of fins, Pisces. If pair appendages present in the form of limbs, tetrapods. Pisces further divide it into the two classes, chondric thighs, ostic thighs. Here it is divided it into the four classes, amphibia, reptiles, aves or birds, and last one is the mammals. So ये है पूरा classification vertebrata. So this is subphylum, this is division, and this is super class. कभी कभी ये पूरा चार्ट देते, यहाँ पे ए लिखते, यहाँ पर बी लिखते, यहाँ पर सी लिखते, ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, राइट? सो दिस इज द क्लियर कट क्लासिफिकेशन ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा. नाउ considering jaws, lag jaws, agyantha and agyantha is further classified it into the class cyclostomata. Now we'll discuss cyclostomata. ये साइक्लोस्टोमेटा क्या है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक साइक्लोस्टोमा के मेंबर शो करते हैं? Now the next title or the next heading is साइक्लोस्टोमेटा. कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा. जैसे हमने फाइलम का स्टडी किया तो उस वीडियोस में मैंने क्लियर कट कहा था कि कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से एग्जांपल्स है. उसी पैटर्न में हमें साइक्लोस्टोमेटा स्टडी करना है. सो फर्स्ट साइक्लोस्टोमेटा के दो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज पेट्रोमाइजोन.
That is the first example. Put it in your NCERT book of the class cyclostomata. And second is magazine, right? पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम जो है दैट इज लैम्प प्रे, एंड मैगजीन का दूसरा नाम जो है दैट इज हैगफिश. सो दीज आर द टू मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा के ये दो एग्जांपल है. अब नेक्स्ट की ये जो मेंबर्स है साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, तो उसमें से फर्स्ट है कि साइक्लोस्टोम्स. साइक्लोस्टोम्स मतलब मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा कैसे है? एक्टोपैरासाइट. Ectoparasit on some fishes. So this is what the first general characteristics considering their habitat. कहाँ रहते हैं, right? So कैसे है? These are ectoparasites on some fishes. Parasites मतलब depend on others. Ecto means outer side. कहाँ पर? तो fishes पे. सेकेंड, ये साइक्लोस्टोम की जो बॉडी है कैसी है? बॉडी इज इलोंगेटेड. बॉडी इज इलोंगेटेड. कैसे है? बॉडी इज इलोंगेटेड, एंड बॉडी इलोंगेटेड बॉडी के ऊपर बियर्स क्या होते हैं? 6 to 15. वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है, एंड उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है? 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स. pairs of gills or pairs of gill slits, and that is used for respiration. And it is used for respiration करने के लिए काम आते हैं. That is the second important characteristics shown by. कौन शो करता है? तो साइक्लोस्टोम. थर्ड, साइक्लोस्टोम में माउथ है, बट कैसा है? सकिंग, जो सक करता है. सकिंग एंड सर्कुलर माउथ. सकिंग एंड सर्कुलर माउथ. दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट. फोर्थ, बॉडी जो है, बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल. बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स. स्केल्स नहीं होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है दैट इज क्लोज्ड. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव. Another important vertebral column is cartilaginous. Cartilaginous. Vertebral column कैसा है? Vertebral column is cartilaginous. So these are the important characteristics. इतने point important characteristics है उसमें. ectoparasites on some fishes. सेकेंड, बॉडी इलोंगेटेड है, उसके ऊपर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. कितने? 6 to 15 pairs of gill slits. And what is the use of gill slits? The gill slits are used for respiration. Respiration करने के लिए यूज होता है. Then sucking and circular mouth. Important is without jaw. jaw नहीं है उसमें, एंड इसलिए उनको यहां पे रखा गया है. माउथ इज सकिंग एंड सर्कुलर विदाउट जॉ. लैक जॉ. जॉ नहीं होता. बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है? तो क्लोज्ड है. एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा है? दैट इज कार्टिलाजिनस. सो दीज आर, ये पॉइंट्स है जो शो करते हैं मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा. राइट. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, जो मेंबर्स दिखाते हैं साइक्लोस्टोमा के और साइक्लोस्टोम. तो साइक्लोस्टोम्स हैबिटेट कैसा है? तो मैंने कहा कि साइक्लोस्टोम कंसीडरिंग हैबिटेट एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, मतलब साइक्लोस्टोम्स. साइक्लोस्टोम्स कैसे हैं? मराइन.
राइट, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन। बट क्या होता है कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर द स्पॉनिंग, अब स्पॉनिंग क्या है? स्पॉनिंग मतलब प्रोसेस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स एंड स्पर्म इनटू वाटर। एक प्रोसेस है और एक एक्ट है जो शो करते हैं साइक्लोस्टोम्स। कौन से प्रोसेस? स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मतलब क्या है? द प्रोसेस और द एक्ट। किसका प्रोसेस है? रिलीजिंग स्पर्म एंड एग्स इनटू द वाटर। कैसे है? तो मराइन है। बट फ्रॉम मराइन दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। कहा जाते हैं? माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग करने के लिए स्पॉनिंग करने के लिए दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। एंड फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग होने के बाद दे डाई, मर जाते हैं। राइट, ओशियन से, समंदर के पानी से, सी वाटर से दे माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मतलब प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स और स्पर्म इनटू द वाटर। स्पॉनिंग होने के बाद दे डाई इन द फ्रेश वाटर, right? But the result of spawning is larvae. These larvae once again migrate to ocean, and start the life. Right. So that is very important process is shown by the members of cyclostomata. That is cyclostomes. कौन से? फिर से I will take the one review कि cyclostomes are exclusively marine, मतलब living in sea water, but they migrate to the fresh water for spawning. Spawning मतलब release of eggs and sperm into the water. And then they die, मर जाते हैं। बट उनकी जो लार्वी होती है, जो फ्रेश वाटर में प्रोड्यूस होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, these larvae migrate or return back to the ocean and start the new life. So this is very important property shown by cyclostomes. So यहाँ पे हमने साइक्लोस्टोम को कंप्लीट किया। तो सिंपली साइक्लोस्टोम्स क्या है? फर्स्ट, एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, body is elongated with 6 to 15 pairs of gill slits which is used for respiration. There is a presence of sucking and circular mouth without jaws. Vertebral column is cartilaginous. Circulatory system is closed and they show the spawning. And two examples. कौन से? Petromyzon, lamprey, and second example is maxine, that is hagfish. So here cyclostomes is completed. In the next video we'll discuss the pisces and two classes, that is chondrichthyes and ostrich thighs.